Position of hydrogen. Hydrogen is the first element in the periodic table. However, its placement in the periodic table has been a subject of discussion in the past. Hydrogen. Atomic number is equal to 1. Atomic mass is equal to 1 AMU. Electronic configuration 1s1 or box configuration. Let us understand about the position of hydrogen. Position of hydrogen is not fixed in the periodic table. Why? This is because hydrogen shows resemblance and contrasts both with alkali metals and halogens. Resemblance with alkali metals. Valence shell electronic configuration of hydrogen is similar to that of alkali metals, NS1, which belong to the first group of the periodic table. Like alkali metals, hydrogen lose one electron to form unipositive ions. Resemblance with halogens. Like halogens, with Ns2Np5 configuration, belonging to the 17th group of the periodic table, it is short by one electron to the corresponding noble gas configuration, Ns2Np6. Like halogen, to a certain extent resembles both with alkali metals and halogens, it differs from them to a great extent as well. Loss of the electron from hydrogen atom results in nucleus H+ of nearly 1.5 into 10 raised to the power -3 picometer size. This is extremely small as compared to the normal atomic and ionic sizes of 50 to 200 pm. As a consequence, H+ does not exist freely and is always associated with other atoms or molecules. Conclusion. Thus, hydrogen is unique in behavior, cannot be replaced on a fixed position, and is therefore best placed separately in the periodic table. Hydrogen or H2. In this module, let us learn about dihydrogen.
Let us first learn about its occurrence. Dihydrogen is the most abundant element in the universe, that is, it contributes almost 70% of the total mass of the universe and is the principal element in the solar atmosphere. However, due to its light nature, it is much less abundant, 0.15% by mass, in the Earth's atmosphere. In the combined form, besides water, hydrogen occurs in plant and animal tissues, carbohydrates, proteins, hydrides including hydrocarbons, and many other compounds. Isotopes of hydrogen. Now let us learn about isotopes of hydrogen. Hydrogen has three isotopes: protium 11H, deuterium 21H or D, and tritium 31H or T. These isotopes differ from one another in respect of the presence of neutrons. Of these isotopes, only tritium is radioactive and emits low energy. Ordinary hydrogen, protium, has no neutrons. Deuterium, also known as heavy hydrogen, has one, and tritium has two neutrons in the nucleus. Of these isotopes, only tritium is radioactive and emits low energy, beta negative particles with half-life as 12.33 years. Chemical nature of isotopes. Since the isotopes have the same electronic configuration, they have almost the same chemical properties. The only difference is in their rate of reactions
mainly due to their different enthalpy of bond dissociation. However, in physical properties, these isotopes differ considerably due to their large mass differences. आइसोटोप वही कहलाते हैं जिनके मास में डिफरेंस है, और आइसोबार्स जिनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है। एटॉमिक नंबर में डिफरेंस हो तो आइसोबार, और एटॉमिक मास में हो तो आइसोटोप्स। A preparation of dihydrogen. Preparation of dihydrogen H2 Part 1. Laboratory preparation of dihydrogen. Dihydrogen is usually prepared by the reaction of granulated zinc with dilute hydrochloric acid. The reaction being zinc reacting with hydrogen ions, giving zinc ion and dihydrogen. Hydrogen can also be prepared by the reaction of zinc with aqueous alkali. Zinc plus 2 NaOH gives Na2ZnO2 plus H2. Commercial production of dihydrogen. The commercial production of dihydrogen can be done through the electrolysis of acidified water using platinum electrodes, which give hydrogen and oxygen gas. Preparation of hydrogen with high purity. High purity, that is, more than 99.95% dihydrogen, is obtained by electrolyzing warm aqueous barium hydroxide solution. Since water does not conduct electricity, so it is electrolyzed between nickel anode and iron cathode. It is important to remember that the two gases produced must be kept separate. This method is the most expensive method. The reaction is as follows. At anode, hydroxide ions oxidized to water and oxygen. At cathode, water is reduced to hydroxide ions. And in the overall reaction, water breaks down to hydrogen and oxygen gas. Preparation of dihydrogen H2 Part 2. Chloralkali method. In this method, sodium hydroxide, chlorine and hydrogen gases are produced by the electrolysis of brine solution.
During electrolysis, the reactions that take place are: at anode, chlorine ions oxidize to chlorine gas. At cathode, water is reduced to hydrogen gas and hydroxide ions. And overall, in reaction, brine produces hydrogen and chlorine gas. Steam reformer process. In this process, there is a reaction of steam on hydrocarbons or coke at high temperatures in the presence of catalyst, yielding hydrogen. General equation for the process is CnH2n plus 2 reacts with 2 moles of H2O at temperature 1270 Kelvin in presence of nickel, gives n mole of CO and 2n plus 1 mole of H2. A mole of CH4 reacts with 1 mole of H2O at temperature 1270 Kelvin in the presence of nickel, gives 1 mole of CO and 3 moles of H2. The mixture of CO and H2 is called water gas. It is also called as syngas. Properties of dihydrogen. Physical properties. In this module, we will understand about the physical properties of dihydrogen. Dihydrogen has the following physical properties, such as: it is colorless, it is odorless, it is tasteless, it is a combustible gas, that is, it burns with pop-up sound, and most importantly, hydrogen is lighter than air and insoluble in water. Chemical properties. The chemical behavior of dihydrogen is determined to a large extent by bond dissociation enthalpy. It is very important to remember the HH bond dissociation enthalpy is the highest for a single bond between two atoms of any element. Which makes hydrogen relatively inert at room temperature due to the high HH bond enthalpy. Since its orbital is incomplete with one s1 electronic configuration, it does combine with almost all the elements. Also, hydrogen reacts mainly due to 1. Loss of the only electron to give H+, 2. Gain of an electron to form H-, and 3. Sharing electrons to form a single covalent bond.
Chemical Properties, Part 1. Reaction with halogens. Hydrogen reacts with halogens, X2, to give hydrogen halides, HX. The reaction being as 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of halogen to produce hydrogen halide. Reaction with dioxygen. Hydrogen reacts with dioxygen to form water. The reaction is highly exothermic. The reaction proceeds as 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen in the presence of catalyst on heating gives 2 moles of water with the liberation of 285.9 kilojoules per mole of heat. Reaction with dinitrogen. With dinitrogen, hydrogen forms ammonia. Reaction is as follows. 3 moles of hydrogen react with 1 mole of nitrogen in the presence of iron as a catalyst. On heating at 673 Kelvin and 200 atmosphere pressure gives 2 moles of ammonia with the liberation of 92.6 kilojoules per mole of heat. This method for the manufacturing of ammonia is called Haber's process. Chemical Properties, Part 2. Reactions with metals. With many metals, combines at a high temperature to yield the corresponding hydrides. One mole of hydrogen reacts with 2 moles metal to give 2 moles of metal hydride, where M is an alkali metal. Reactions with metal ions and metal oxides. Hydrogen reduces some metal ions in aqueous solution and oxides of metals less active than iron into corresponding metals. This can be understood by the following reaction. In these reactions, loss of electron from hydrogen takes place, that is, oxidation of hydrogen, and reduces the other. In the equation, lead ion has been reduced and hydrogen has been oxidized. The generic form of the equation will be H2 reacts with metal oxide to form metal and water, where M is a metal. Reactions with organic compounds. Hydrogen reacts with many organic compounds in the presence of catalysts to convert them into other useful products.
For example, hydrogenation of vegetable oils. Hydrogenation of vegetable oils using nickel as catalyst converts them into edible oil, commonly known as vanaspati ghee. From the images, you can clearly see that C double bond or unsaturated bond is converted to C single bond or saturated bond by addition of H bond. Hence, in the process of hydrogenation, unsaturated bond is converted into saturated bond. Hydroformylation reaction. Hydroformylation is the addition of carbonyl group. Hydroformylation of olefins yields aldehydes which further undergo reduction to give alcohols. The first reaction being hydrogen on reaction with alkenes in the presence of carbon monoxide produces aldehydes, which is a formulated product. Further aldehydes undergo reduction to give alcohol. Covalent or molecular hydride. Dihydrogen forms molecular compounds with most of the p block elements. Some familiar examples are CH4, NH3, and H2O. Hydrogen compounds of nonmetals are also considered as hydrides. Being covalent, they are volatile compounds. Molecular hydrides are classified according to the relative number of electrons and bonds in their Lewis structure. Molecular hydrides are classified into three types. 1. Electron deficient. 2. Electron precise. 3. Electron rich hydrides. Electron deficient molecular hydrides. An electron deficient hydride, as the name suggests, has incomplete valence shell configuration and acts as Lewis acid. For example, diborane or B2H6. Here is the structure of diborane or B2H6. Let us carefully look at the structure of diborane. The BHB bridging bonds are 3C2E bonds, that is, two electrons shared between three centers, and not conventional 2C2E, two center two electron bonds. B has only three valence E minus or electron and cannot form four 2C2E bonds and hence is termed as electron deficient. All elements of group 13
form electron-deficient compounds. They act as Lewis acids, that is, these compounds are electron acceptors. Electron-precise molecular hydrides. Electron-precise compounds contain completely filled valence shell with no lone pair. All elements of group 14 form such compounds such as CH4. The compounds are tetrahedral in shape. The general formulae for the compounds will be EH4, where E is equal to group 14 element. Let us now understand about electron-rich hydrides. As the name suggests, electron-rich hydrides have excess electrons which are present as lone pairs. Elements of group 15 to 17 form such compounds. As the name suggests, electron-rich hydrides have excess electrons which are present as lone pairs. Examples of such compounds are shown here. Ammonia has one lone pair. इसी पे क्वेश्चन आ जाते अमोनिया में कितने Water has two. वाटर में 2 लोन पेयर And hydrogen fluoride has three lone pairs. They behave as Lewis bases, that is, electron donors. A very interesting thing to understand is that the presence of lone pairs on highly electronegative atoms like N, O, and F in hydrides results in hydrogen bond formation between the molecules. This leads to the association of molecules as in the case of water. Water, the wonder liquid. Look at the water in the pond. See how clean and refreshing it is. When the temperature decreases and it starts to snow, water on the top freezes, and water beneath the freezing water is in liquid form and keeps all the aquatic animals warm in winters. During summers, the aquatic animals do not feel the heat as water is very cooling. All the animals drink water from the pond to quench their thirst. Sources of water. Look at the following pictures and try to identify these sources of water. Tube well,
tap, sea, lake, river, well, clouds, glacier, waterfall, tank. These are different sources of water that give water that we use in our daily life. Uses of water. Water is very essential for all living beings. Plants need water to make their own food. Animals need water to quench their thirst and replenish water present in their body from time to time. 70% of our body is made of water, and we need to replenish it from time to time. Let us see, where do we use water in our daily life? Water is used for brushing teeth, for taking bath, for drinking, to water the plants, to wash the dishes, to wash the car, to clean the house, to wash the clothes. We should never waste water. It is very important for us. Here are some simple steps that you can take to save water. Don't leave the tap open while brushing your teeth. Don't take long showers. Fix the taps that leak in your house. Leaks waste a lot of water. Hydrides. A hydride is the anion of hydrogen, H-, or more commonly a compound in which one or more hydrogen centers have nucleophilic, reducing, or basic properties. That is, hydrogen ion has the tendency to A hydride is the anion of hydrogen, H-, or more commonly a compound in which one or more hydrogen centers have nucleophilic, reducing, or basic properties. That is, hydrogen ion has the tendency to denote electron pair. The general formula of hydrides is EHX or EMHN. E is the symbol of an element. X, M, N depends upon the kind of elements.
Example, MgH2 or B2H6. Dihydrogen combines with almost all elements, except noble gases, to form binary compounds called hydrides. Hydrides are of three types: ionic hydrides, covalent hydrides, metallic hydrides. Ionic or saline hydrides. These are stoichiometric compounds of dihydrogen formed with most of the S block elements, which are highly electropositive in character. That is, these elements can donate electrons to form bonds. However, it is very important to understand that significant covalent character is found in some lighter metal hydrides such as LiH, MgH2, BeH2. The ionic hydrides are generally crystalline. For example, magnesium hydride or MgH2. Characteristics of ionic hydrides. They are crystalline, they are non-volatile, they are non-conducting in solid state, they conduct electricity in molten state, on electrolysis liberate dihydrogen gas at anode, which confirms the existence of H- ion. The reaction being H- ions at anode give H2 gas and 2 electrons. Reaction of hydrides with water. Saline hydrides react violently with water, producing dihydrogen gas. The reaction being NaH solid reacts with water to form aqueous solution of sodium hydroxide and liberates dihydrogen gas. नमस्कार साथियों, तो ये थी हमारी एनिमेटेड सीरीज जो कि आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर के बारे में समझा रही थी। कल मैं आपको स्वयं के नोट्स से समझाऊंगा। बेस्ट स्टडी मटेरियल क्लास पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाती है, तो टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लें। कल जो क्लास होगी वो मैं अपने नोट्स से समझाऊंगा और उन क्लास पीडीएफ को मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल पर। जो नोट्स आप कोई भी एग्जाम दें, इंक्लूडिंग जेईई, नीट, हर एग्जाम में काम आएंगे।
एक रिकैप देखते हैं क्या सीखा है आपने। सबसे पहले तो एल्केन्स, एल्केन्स कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं और सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसके बाद बात करते हैं जनरल फॉर्मूला, 10th क्लास में भी पढ़ाया था, अभी फिर पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आप भूल जाते हैं, मासूम बच्चे हैं भूल जाते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। मतलब कि जैसे मैं मीथेन का एग्जांपल लूँ तो मीथेन में एक C है, तो H जो होगा वो होगा 1 into 2, मतलब 2 1 जा 2 और प्लस 2 4। इसके बाद जो आएगा वो आएगा C2 आया है तो 2 की जगह 2 2 जा 4 प्लस 6, मतलब प्लस 2, मतलब C2H6। इस तरीके से आपकी जो सीरीज होती है चलती जाती है। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, मीथेन CH4 इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। फर्स्ट मेंबर होता है, शुरू के 4 जो होते हैं उनके ट्राइबल नेम्स होते हैं मीथेन तक, उसके बाद नंबर के हिसाब से होते हैं पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऐसे करके, ठीक है। तो CH4 इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप ऑफ दिस फैमिली। मीथेन हैज टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल होता है। देख लीजिए स्वयं की आंखों से, नेत्र को ओपन कर लीजिए, नींद आ रही हो तो चाय पी लीजिए, क्योंकि अब देखना तो आपको पड़ेगा, बताना मेरा काम है। तो ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, HHH, 4 H जुड़े हुए हैं कार्बन से सिंगल बॉन्ड से। In alkanes, tetrahydrals are joined together in which carbon and hydrogen bond lengths are 154 pm and 112 pm respectively। कहने का मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 154 pm होती है, और कार्बन कार्बन की जो होती है वो 154 pm होती है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच लेंथ होती है वो 112 pm होती है। अभी आ जाए क्वेश्चन तो लगा दीजिएगा। फिर आता है नोमेनक्लेचर, जो आपने पढ़ा, नोमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म। तो नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम्स उनके पैरेंथेसिस से दिए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट 3 एल्केन मीथेन, ईथेन और प्रोपेन होते हैं, उसके बाद चौथा जो होता है वो होता है ब्यूटेन, ठीक है। ये ट्राइबल नेम्स है ब्यूटेन तक। ओनली प्रोपेन्स, ये जो है इनका होता है एक ही स्ट्रक्चर, मीथेन, ईथेन और प्रोपेन, इनका एक ही स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो हायर एल्केन आते हैं उनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, 4 कार्बन एटम्स ऑफ C4H10, C4 आया मतलब ब्यूटेन है, 4 आया मतलब ब्यूटेन है। फिर 4 2 जा 8 करोगे, 4 2 जा 8 करके प्लस 2 करोगे तो H10 आ जाएगा। अच्छा, कैन बी ज्वाइंट ईदर, देखिए 3 तक तो सेम है, मतलब कि प्रोपेन तक तो सेम है, फिर ब्यूटेन से एक से ज्यादा हो जाते हैं। ज्वाइंट ईदर इन अ कंटिन्यूअस चेन और विद अ ब्रांच चेन इन द फॉलोइंग। या तो कंटिन्यूअस चेन में भी हो सकता है या फिर ब्रांच चेन में भी हो सकता है। देखिए 2 वेज लाइक, इसलिए तो हम इसको कहते हैं एन ब्यूटेन अलग लिखते हैं और वो अलग लिखते हैं। ये देखिए, एक तरीका है जो कि क्या है, कॉन्टिन्यूअस चेन का है, और एक है जो कि ब्रांच चेन का है। सबसे पहले तो 1 2 3 4 तो ब्यूटेन हुआ, यहां भी 1 2 3 और नीचे 4 तो ब्यूटेन हुआ। बट यहां पर आपको दिख रहा है कि ये कैसा कंटिन्यूअस में है और ये ब्रांच चेन में है। अब शुरुआत करी, एच कितने होंगे सर, H10 जरा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों जगह 10 ही है, बट जुड़ने का तरीका, कनेक्ट करने का तरीका डिफरेंट है। फर्स्ट वाले में कॉन्टिन्यूअस सी है, आप देख सकते हो, जबकि सेकंड वाले में क्या है, नीचे से जुड़ा हुआ है। अब इसको पढ़ने का तरीका
हम पहले भी बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। 4 है तो 4 को ब्यूटेन कहते हैं, नॉर्मल है, कॉन्टिन्यूअस है तो हम एन ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। फिर ये फर्स्ट तरीका था। अब देखिए 1 2 3, 3 कार्बन से नीचे आपको ब्रांच जोड़ी गई है, तो यहाँ पर क्या था 1 2 3 1 2 3, बाकी यहाँ एच एस थे, यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पर एक एच यहाँ पर है, और फिर यहाँ से ब्रांच जोड़ी गई है 1 2 3 1 2 3, बोले तो CH3 ब्रांच जैसे जुड़ती है वो आपने पढ़ा है, वो कैसे जुड़ती है, प्रोपिल के फॉर्म में, आइल के फॉर्म में। तो ये 1 2 3 प्रोपिल इसमें जुड़ा हुआ है। अब इसका नाम देखिए 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, मैंने बताया ना YL मिथाइल। अब यहां पर आपको ये दिख रहा है कि CH3 कहां कहां जुड़ा हुआ है। एक तो 1 2 3 ये जुड़ा हुआ है, और देखिए एक ये जुड़ा हुआ है 1 2 3, दो जगह जुड़ा हुआ है तो लिखा 2 मिथाइल, फिर 1 2 3, 3 मतलब प्रोपेन, 3 मतलब प्रोपेन, और इसी को कहते हैं आइसोब्यूटेन। जब ये इस तरीके से जुड़ जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, आइसो। एक होता है आइसो और एक होता है एन ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। 5 carbon atoms of C5H10 can be joined either in a continuous chain or with a branch chain in the following। अब C4H10 के बाद C5S10 को बोले तो पेंटेन, 5 मतलब पेंटेन को इन्हें जोड़ के बताया है। देखिए 1 2 3 4 5 कंटिन्यूअस है, मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब एन पेंटेन। अब उसी को आइसो में जोड़ के बताया 1 2 3 4, 4 को वहीं रखा और एक को निकाल लिया, एक कार्बन को निकाल के फिर यहां से कनेक्ट किया 1 2 3, तो ये क्या बन गया, मिथाइल बन गया। यहाँ भी 1 2 3, तो ये भी क्या बन गया, मिथाइल बन गया। तो ये कितना हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, या इसी को कहेंगे आइसो पेंटेन। फिर उसी को दूसरे तरीके से जोड़ के बताया। अब देखिए दूसरे नंबर पर मिथाइल जोड़ा था, दूसरे नंबर पर मिथाइल जोड़ा था तो हमने क्या बोला, 2 पर मिथाइल। अब एक से ज्यादा मिथाइल जुड़ जाए तो डाई आ जाएगा। अब क्या हुआ, 2 पर ही एक ये मिथाइल जुड़ा है और एक ये मिथाइल जुड़ा है, मतलब कि 2 पर ही दो जगह, तो 2 डैश डाई मिथाइल, और 1 2 3 मतलब प्रोपेन। और इसको ही जब दो जगह से जुड़ जाता है तो कहते हैं नियो। एक जगह से जुड़ता है तो आइसो और दो जगह से जुड़ता है तो नियो। स्ट्रक्चर्स आई फर्स्ट एंड सेकेंड possess सेम molecular फॉर्मूला बट डिफर इन दियर बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बीपी लिखा था ना, आपने पूछा नहीं बीपी क्या है, ये इनके बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, इनमें डिफरेंस आ जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम होता है, बट बीपी में डिफरेंस आ जाता है। सिमिलरली स्ट्रक्चर्स थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ possess द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड आर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, whereas structures third fourth and fifth are isomers of pentanes. Since difference in properties is due to difference in their structures, they are known as structural isomers। structural isomers क्यों, क्योंकि डिफरेंस जो है उनके स्ट्रक्चर में है। It is also clear that structures first and third have continuous chain of carbon atoms, but structures second, fourth, and fifth have a branch chain. Such structural isomers which differ in chain of carbon atoms are known as chain isomers। जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, चेन में डिफरेंस है तो chain isomers। Based upon the number of carbon atoms attached to a carbon atom, the carbon atom is termed as primary 1 degree, secondary 2 degree, or tertiary 3 degree, and quaternary 4 degree। Carbon atoms attached to no other carbon atom as in methane or
to only one carbon atom is in ethane is called primary carbon atom. जब कोई नहीं जुड़ा रहता तो प्राइमरी बोलते हैं, जुड़ गया तो सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टररी हो जाता है. टर्मिनल कार्बन एटम्स आर ऑलवेज प्राइमरी. जो टर्मिनल पे रहते हैं वो तो प्राइमरी ही रहते हैं. ठीक है. कार्बन एटम्स अटैच टू टू कार्बन एटम इज नोन एज सेकेंडरी. टू कार्बन पर जो एटम कार्बन एटम अटैच होते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी, और जो थ्री कार्बन पर होता है उसको कहते हैं टर्सरी. अब प्रॉब्लम देखिए, लिखने जो आती हैं आपको. आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. CH3 पर 3 है, फिर CCS2 CCS3 पर 3 है. नाम लिखना है. तो पहले तो आप इसके स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप नाम लिख पाओगे, है ना. स्ट्रक्चर बनाने पर हमें ये पता चला कि हम इस तरीके से इनके सॉल्यूशंस लिख सकते हैं. जब स्ट्रक्चर बनाओगे तब आप सॉल्यूशन लिख पाओगे. जैसे ये मिथाइल दो जगह जुड़ा हुआ है, अब जो स्ट्रक्चर बनाओगे तो पता चलेगा कि 3 पर क्या जुड़े हैं, डाई मिथाइल जुड़ा हुआ है. और टोटल कितने हैं कार्बन, 5 है. देखिए 2 2 4 और 1 5 5 मतलब पेंटेन. ये आ गया इसका 2 5. अब उल्टा, अब कहा कि ये सॉल्यूशन दे दिया उनने, नेम दे दिया और आपसे कहा कि स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए. तो हम देखेंगे कि पहले क्या है, 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन. हेक्सेन से हमें पता चल गया कि 6 कार्बन एटम है अपने पास. 1 2 3 4 5 6. क्या चाहिए, डाई मिथाइल चाहिए. 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ने हैं, CH3 जोड़ने हैं. कहाँ कहाँ जोड़ने, 2 और 5 पर. तो 2 पर CH3 जोड़ दिया और 5 पर CH3, खत्म. कितना आसान होता है ये. कंफर्मेशन, एल्केन्स कंटेन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स. एल्केन्स कंटेन कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अराउंड internuclear axis of the carbon carbon bond which is not disturbed due to rotation about its axis. This permits free rotation about carbon carbon single bond. This rotation results into different spatial arrangement of atoms in space which can change into one another. Such spatial in arrangements of atoms which can be converted into one another by rotation around C single bond are called conformations or confers or rotamers. तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन. रोटेशन अराउंड अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉट कंप्लीटली फ्री, इट इज हिंडर्ड. हिंडर्ड जान तो, हिंडर्ड मतलब रोका जाना, व्यवधान, फाटक लगा देना, हिंड्रेंस करना. तो विच इज हिंडर्ड बाय अ स्मॉल एनर्जी बैरियर, ये लिखा बैरियर के द्वारा. और बैरियर मतलब फाटक. 1 to 20 किलोजूल मोल इनवर्स due to weak repulsive interaction between the adjacent bonds. Such a type of repulsive interaction is called torsional strain. अब ये आपको देखना पड़ेगा आपके सिलेबस में ये है या नहीं. वैसे तो होना चाहिए, दिया है, होना चाहिए. फिर आता conformations of ethane. Conformation in which hydrogen atoms attached to two carbons are as close together as possible is called eclipsed. Conformation and the other in which hydrogens are as far as apart as possible is known as the staggered conformation. Any other intermediate conformation is called a skew conformation. Eclipse and the staggered conformation can be represented by Shawhorse and Newman projections. फिर ये Shawhorse देखना जरा, बुक में दिया Shawhorse projection, देखो तो.
दिया हुआ है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। इन दिस प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल इज व्यूड अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है कि हम जो मॉलिक्यूल को देखते हैं वो देखते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग। इट इज देन प्रोजेक्टेड ऑन पेपर बाय ड्राइंग द सेंट्रल कार्बन कार्बन बॉन्ड एज अ somewhat longer straight line. Upper end of the line is slightly tilted towards right or left hand side. The front carbon is shown at the lower end of the line, whereas the rear carbon is rear मतलब पीछे वाला is shown at the upper end. Each carbon has three lines attached to it corresponding to three hydrogen atoms. The lines are inclined at an angle of 120 degree to each other. ये देखिए, ये स्टैगर्ड है और ये इक्लिप्स है। अब आता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। इन दिस प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल इज व्यूड एट द सी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हेड ऑन। द कार्बन एटम नियरर to the eye is represented by a point. Three hydrogen atoms attached to the front carbon atom are shown by three lines drawn at an angle of 120 degree to each other. The rear carbon atoms, the carbon atom away from the eye, is represented by a circle. जो आई से दूर होता है उसको सर्कल से डिनोट करते हैं। And the three hydrogen atoms are shown attached to it by the shorter lines. तो जो छोटी लाइन है इनसे हम दिख रहा है कि ये छोटी लाइन वाले तीन हाइड्रोजन एटम जो है उससे कनेक्ट हैं और इनका जो एंगल है इनके बीच में वो कितना होगा 360 में से 3 हुए तो 12 मतलब 120 डिग्री टू ईच अदर। ये इक्लिप्स्ड था। एंगल ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ टॉर्शन और डाईहाइड्रल एंगल ये बताया है कि ये एंगल को ये बोलेंगे चाहे रोटेशन का हो चाहे टॉर्शन का हो। वो स्टैगर्ड था। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन है। द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन the electron clouds which affects stability of a conformation is called torsional strain. Torsional strain. Magnitude of torsional strain depends upon the angle of rotation about C bond. This angle is also called dihedral angle or torsional angle. तो इसमें सीधी सी बात कि टॉर्सनल स्ट्रेन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है किस पर, सी बॉन्ड के रोटेशन एंगल पर। उनके रोटेशन का जो एंगल होगा उस पर डिपेंड करेगा। दिस एंगल इज आल्सो कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल या टॉर्सनल एंगल। Of all the conformation of ethane, the staggered form has the least torsional strain and the eclipsed form the maximum torsional। तो सीधी सी बात eclipsed form का मैक्सिमम होगा और जो आपका स्टैगर्ड फॉर्म होगा उसका कैसा होगा, लीस्ट टॉर्सनल स्ट्रेन होगा। ठीक है, कोई भी ईथेन के कन्फर्मेशन हो तो उसमें जो स्टैगर्ड फॉर्म होगा उसका होगा लीस्ट टॉर्सनल स्ट्रेन और जो इक्लिप्स्ड फॉर्म होगा उसका होगा मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन। The energy difference between the two extreme forms is of the order of 12.5 kilojoule mole inverse, which is very small। तो ये एनर्जी डिफरेंस आ गया टू एक्सट्रीम के बीच में, पूछ ले तो 12.5 किलोजूल पर मोल। खत्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल अपने नोट से आपको बताएंगे, फिर समझाएंगे। कल एक्सप्लेनेशन क्लास रहेगी, इसमें तो फिर बहुत है, 7 या 8 लेसन होंगे। देखो हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा है।
Preparation and properties of alkenes. Petroleum and natural gas are the main sources of alkanes. However, alkanes can be prepared by following methods: from unsaturated hydrocarbons. Dihydrogen has adds sorry gas adds to alkenes and alkynes in the presence of finely divided catalysts like platinum, palladium, nickel to form alkanes. This process is called hydrogenation. These metals absorb dihydrogen gas on their surfaces and activate the hydrogen-hydrogen bond. Platinum and palladium catalyze the reaction at room temperature, but relatively higher temperature and pressure are required with nickel catalyst. ये एग्जांपल दिए हुए हैं. फिर एल्काइल हैलाइड्स आ गया. एल्काइल हैलाइड से कैसे बनते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनते हैं. Properties of alkanes, physical property, chemical properties. ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. शेयर करिए अपने मित्रों के साथ ताकि हम ऐसे ही आपके लिए लाइव लेके आते रहें, वीडियो लेके आते रहें. भाई बड़ी मेहनत लगती है, समय लगता है ये सब करने के लिए, तो कम से कम आप लाइक शेयर कमेंट तो कर ही सकते हैं. हम फिर कल मिलेंगे. एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं इस चैप्टर का, अपने स्टडी नोट्स के साथ टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूंगा, है ना. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कमेंट शेयर करते रहिए ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे. थैंक यू सो मच. रिमेंबर वन थिंग, सेफ्टी ऑलवेज बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड एट योर होम. टेक केयर. बाय बाय. जय श्री श्याम. आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी और है देने के लिए. एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल की चयन परीक्षा की तैयारी का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जिनको भी करना हो वो संपर्क कर सकते हैं. ये हमारा टेलीग्राम का हैंडल है, इस पर आपको चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो सारे नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. ये यूट्यूब का हैंडल है, ये इंस्टाग्राम का है. ठीक है. और कोई भी फीडबैक या जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर हमारे चैनल से.